Good morning, students. Let us begin with serial first lecture online for physics for today. So, let us begin with the first lecture by Shendye madam. Yesterday, while discussing, we were talking about rotational motion. So, rotational motion can only be executed by body if torque acts on it. So pure rotational motion is possible when body is acted upon by torque. Torque is produced by two parallel forces equal in magnitude, opposite in direction. When torque acts on body, resultant force experienced by body is zero. But as its effect with non-zero magnitude of torque, body is set in rotational motion. When body is in rotational motion, it acquires angular velocity. In rotational motion, all the quantities are described again in terms of angular displacement, angular velocity, angular acceleration, like the quantities in circular motion. So, if under the action of torque, body set in rotational motion, if is achieves constant angular velocity omega, we derived yesterday the equation for rotational kinetic energy, which is analogous to linear kinetic energy studied in linear or translational motion. So you can take analogy between translational motion, linear motion with rotational motion. We can relate analogous term in both these motions. For example, linear velocity in linear motion analogous to angular velocity in rotational motion. Similarly, we can have the role of mass, that is inertia, played in linear motion analogous to moment of inertia, which is also called rotational inertia in rotational motion. So with taking analogy between these two motions, you can relate these terms. In addition, in rotational motion, you can define equation between torque and acceleration. In linear motion, force acting on body produces its linear motion, and during linear motion, if velocity is continuously changing either in magnitude or in direction, body acquires linear acceleration, and we write the equation F is equal to m times a. So the effect of force is to produce linear acceleration in translational or straight line motion. Similarly, with taking this analogy, you can relate equation between torque, which is responsible to set the body in rotational motion, and if angular velocity is not remaining constant. For example, when fan is switched on during some time interval till it achieves constant angular velocity, motion is accelerated, it has angular acceleration. Means torque can produces angular acceleration if angular velocity is not constant. So torque plays the same role as that of the role played by force in linear motion. Similarly, angular acceleration produced in rotational motion, if omega changes continuously, then torque plays the same role as that of force, which governs the effect in linear motion. तो ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए,
उसकी एनालॉजी लेके हम लोग वी कैन रिलेट टॉर्क विथ इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. So taking analogy between linear motion and rotational motion, today we'll proceed further to relate few terms in rotational motion, taking analogy with linear motion. So we will start with first equation today to relate torque with angular acceleration when body in rotational has changing angular velocity. When we calculated expression for kinetic energy rotational of the body in rotational motion, we have assumed angular velocity with which body is rotating is constant. But to find relation between torque and acceleration produced, you have to assume body has certain angular acceleration, that is its angular velocity is changing. So write down the first question. Derive relation. Everyone has to write the question. Derive relation. Derive relation between. Derive relation between torque. Derive relation between torque and angular acceleration in rotational motion and angular acceleration in rotational motion. In rotational motion. It is point number 1.9. Point number 1.9, page number 17. Mention on page number 17. I have focused now on the notebook. मैं नोटबुक पे लिख के जा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे ये सब लिखोगे. This expression also is important and is asked in exam for 3 marks. रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में जितने सारे रिलेशंस है वो 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं. Wherever necessary, you have to draw diagram and with its explanation proceed further to derive the equation and to have the last step of the equation. So I have started with point number 1.9 from page number 17. वो मैंने अभी चालू किया है. And for that I have taken analogy between linear motion and rotational motion. मुझे लगता है there is no any difficulty. Everyone is getting the video audio well. If any, post the suggestions on my personal WhatsApp number because I have muted everyone. Should we begin? So first let us assume, मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग ये इक्वेशन निकालेंगे तभी एज्यूम करना है बॉडी possesses certain acceleration. It doesn't have constant velocity. So we will assume rotating body having the acceleration produced may be constant. Change in velocity with respect to time in given intervals may be same. वेलोसिटी में जो बदल हो रहा है पर टाइम वो हर इंटरवल में हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं. सो यू कैन हैव द बॉडी having constant angular acceleration. So as usual we will consider a rigid body with constant speed which will produce constant acceleration.
तो लिखना चालू करो आप लोग. कंसिडर a rigid body. Consider a rigid body. Rigid body means what? If you apply force to set the body in motion, even under application of force, distance between particles of the body do not change. उसको rigid body बोलते हैं. तो हम लोग assume करेंगे एक rigid body है. It is having rotational motion with constant angular acceleration alpha. Consider rigid body rotating with constant angular acceleration alpha. With constant angular acceleration alpha. When it rotates, it should rotate about certain axis, and in rotational motion I already have told you the axis of rotation lies in the body, in the plane of body. So you have to assume the body is rotating about an axis passing through it, suppose through point O. The body is थ्री डायमेंशनल. उसको थिकनेस है ऐसा भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. तो ये अपर सरफेस हुआ और ये जो है वो लोअर सरफेस होगा, नीचे वाला डॉटेड लाइन का. तो ये पॉइंट हम लोग ओ एज्यूम करेंगे. तो ये एक्सिस दिखाई नहीं देगा और नीचे गए तो एक्सिस दिखाई देगा. द बॉडी इज ऑफ इरेगुलर शेप ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं. एनी बॉडी might be symmetrical or might be asymmetrical, and it is rotating about axis passing through it with constant angular acceleration alpha. ऐसे हम लोगों ने assume किया है. For convenience, for simplicity, to write down the mathematics behind, what we will assume: body made up of n particles of masses m1, m2, up to last particle mn, situated at distances r1, r2 up to rn, respectively from the axis of rotation. Actually in book they have taken section. ये body rigid है ना, तो ये थ्री डायमेंशनल है, उसको कुछ तो थिकनेस है. सो डिफरेंट दिस पार्टिकल्स माइट बी लाइंग इन डिफरेंट प्लेन्स. अभी मैंने एक ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, जमीन को, अर्थ को पैरेलल. ये दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ. सो दिस पार्टिकल्स एक्चुअली लाई in different horizontal planes, but in figure 1.17 in the book they have taken only the horizontal section. ये जो horizontal plane में section है ना body का, वो हिसाब से उन लोगों ने 2-dimensional figure draw की है, while I am drawing 3-dimensional figure, assuming body has certain thickness. तो ये सब पार्टिकल्स एक ही प्लेन में लाई डाउन नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन में लाई डाउन होंगे. उनने जो सेक्शन दिया है बुक में डायग्राम में, वो एज्यूम किया है कि ऑल दिस पार्टिकल लाई इन वन एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन. ऐसा उन लोगों ने दिया है. तो ऐसी भी डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. एक पार्टिकल m1 इधर, एक पार्टिकल m2 इधर, एक पार्टिकल m3 इधर. ऐसे भी अलग अलग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग ये लाई डाउन है पार्टिकल्स ऐसा बोल सकते हैं. So for convenience in book they have given the particles lying in one and single horizontal plane taking horizontal section of the body. ऐसा उन लोगों ने डायग्राम में दिखाया है. तो क्या हो जाएगा? We will assume बॉडी मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स. सब कुल मिला के बॉडी में n पार्टिकल्स है. फाइनाइट पार्टिकल्स. एक्चुअली इफ यू टेक अ हेवियर बॉडी और अ वेरी ह्यूज बॉडी, you are not able to count number of particles because indefinite number of particles constitute such body which is very huge. So for
convenience, for the sake of convenience, we are assuming body made up of finite n particles, masses m1 to mn, at distances r1 to rn from the axis of rotation respectively. फॉर कन्वीनियंस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी फाइनाइट पार्टिकल्स से बनी हुई है. अभी क्या होता है, व्हेन बॉडी रोटेट्स ऑल इट्स पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन. हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है. बॉडी एज अ होल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन on account each and every individual particle sets in circular motion, and when each particle is in circular motion with its own path, it will have again constant angular acceleration. बॉडी अगर constant angular acceleration से मूव होती है तो हर एक पार्टिकल को भी during its circular motion will gain constant angular acceleration. So we will consider particle of mass m1 lying at distance r1 from axis of rotation. Each and every particle will have constant angular acceleration during their circular motion. तो अभी क्या है, जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव टेकन सम ऑफ all linear kinetic energies of individual particles to find rotational kinetic energy of the entire body. अभी हम लोगों को रोटेशनल बॉडी की टॉर्क कितनी है उसके ऊपर, सो दैट इट विल एक्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसमें रिलेशन निकालना है. अगेन टेक एनालॉजी, वी कैन फाइंड, अभी क्या है, उसकी हर एक की रेडियस अलग अलग है. So, being in circular motion, we can assign linear quantities for each of these particles. तो इसकी linear velocity, उसका linear acceleration we can define, and we know relation between angular acceleration and linear acceleration. So, with the help of this linear velocity concept assigned to the particle, let us define linear acceleration gained by each and individual particle of the body when body as a whole, entire body is rotating. रोटेट बॉडी हो रही है लेकिन ईच पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट किया गया है. सो in circular motion for the given particle you can define linear acceleration. So we are interested now in finding linear acceleration possessed by each and every individual particle, and at last we will find torque produced on each particle. So linear acceleration for particle of mass m1 at distance r1 from axis of rotation will be then a1 is equal to r1 alpha. Similarly, linear acceleration for second particle mass m2 at distance r2. अभी क्या है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, हर एक पोजीशन जिसकी रेडियस है उसमें और लिनियर वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल रहता है. लिनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. टेंजेंट मीन्स व्हाट, अ लाइन touching the given path at one single point. So this linear velocity is always tangential, and hence फोर्स एक्सपीरियंस, लिनियर फोर्स किंवा लिनियर एक्सीलरेशन जो तैयार हो जाता है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगा. सो लिनियर एक्सीलरेशन जो तैयार करता है वो फोर्स, लिनियर फोर्स भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगा, लिनियर वेलोसिटी. सो इन डायग्राम for particle m1 they have shown this distance from axis of rotation and force linear experienced by it. तो हम लोग इधर फोर्स की कंसेप्ट यूज करते हैं. सो एक्सीलरेशन पार्टिकल में आर
अल्फा इतना आ जाएगा। हर एक पार्टिकल के लिए अल्फा की वैल्यू सेम है। So, force which produces linear acceleration per particle of this body, linear force ले रहे हैं हम लोग, कितना आएगा? mass into acceleration, so m1a1. For second particle, linear force experienced by it when body entire rotates is m2a2. Similarly, for nth particle, linear force experienced by it will be m3mn into क्या आएगा? an. ऐसा हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा. When substitute values of a, you can write m1 r1 alpha. f2 will be m2 r2 alpha. Similarly, fn for the last nth particle will be mn rn alpha. मैंने ये n small निकाला है. एक्चुअली they have in book they have taken this nth particle symbol capital. सब जगह वो कैपिटल है. तो ये लीनियर फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं. एंड फोर्सेस आर टेंजेंशियल, सो देयर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन along the circular path of a given particle. आप लोगों को ये फोर्स परपेंडिकुलर दिखाना है. अगर आप लोग ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर निकालते ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में. Otherwise, for simplicity, you can have 2-dimensional. Means all particles you have to assume lying in one. They have not shown all nth particle. जो उन लोगों ने सेक्शन लिया है बुक के डायग्राम में, उस डायग्राम में खाली 3 पार्टिकल्स m1, m2, m3 लाए हो रहा है. तो mn पार्टिकल में लाए इन सम अनदर प्लेन. ऐसा डायग्राम हम उन लोगों ने 2 डायमेंशनल निकाला है, वाइल मैंने 3 डायमेंशनल का एक्सप्लेनेशन दिया है. एंड हेंस दिस लीनियर फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क एंड हेंस वी कैन फाइंड टॉर्क. टॉर्क डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी की है. व्हाट इज टॉर्क? मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स on the given body. So using this F you can find torque produced by particle of mass m1 at distance r1. कितना आएगा फिर? मूवमेंट आर्म कितना हो गया? r1 into f1. Similarly, torque experienced by particle of mass m2 will be r2 into f2 up to toe of last particle is equal to Rn, distance of it from axis of rotation, and linear force experienced by it. You can find their values individually. So R1 into M1 R1 alpha. So R1 will be square. So M1 R1 square alpha. Tau2 will be M2 R2 square alpha. Similarly, tau n will be mn rn square into alpha. Hence, total torque, effective torque experienced by body as a whole, entire body, will be addition of all these torques. Magnitude of resultant torque. Torque, remember, torque is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स इज ऑलवेज अ टेंजेंशियल. सो ऑल दीज टॉर्क्स प्रोड्यूस, ये तो एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट है और ये दूसरा पॉइंट. सो ये 2 फोर्सेस हो गए. तो उनकी डायरेक्शन टॉर्क की भी ऑल पार्टिकल्स की सेम है. सो टॉर्क्स प्रोड्यूस ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल आर डायरेक्टेड इन वन एंड द सेम डायरेक्शन. टॉर्क कैसा होगा? along the axis. एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज मोशन होती है तो टॉर्क कैसा होगा? हर एक पार्टिकल में जो टॉर्क तैयार हुआ है वो will point in one and the same direction along the axis of rotation. So you can add all these torques even if they are vectors in nature. ये vectors है, फिर भी हम लोग सब
एक ही डायरेक्शन में है along the axis, तो उनकी एडिशन कर सकते हैं. So what happens here? So resultant torque experienced will be again along the axis, and we can find its magnitude by adding all these torques experienced by individual particles. So you can write m1r1 square alpha plus m2r2 square alpha plus dot 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 mn square alpha, and with using maths we can replace this addition. mr square is common, alpha is common, so I can write mi square, where I is number of particle running from 1 up to n. The quantity in the bracket is moment of inertia I. Yesterday we defined moment of inertia, which plays same role as that of mass played in linear motion, straight line motion. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं, रोटेशनल मास ऐसा भी कह सकते हैं. It always opposes the rotational motion. It is the quantity which helps the body to retain its original condition. अगर शुरू में बॉडी एट रेस्ट है तो ये रोटेशनल इनर्शिया इसको मोशन में सेट करते समय अपोज करेगा. इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन रोटेशनल मोशन एंड इफ यू वांट टू स्टॉप इट, देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया. रोटेशनल मोशन में ये हर एक चेंज को, बॉडी के चेंज को अपोज करता है. इट ऑलवेज अपोजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इसलिए उसको इनर्शिया कहा जाता है. सो इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर मैंने एक्सिस चेंज किया तो ये हर एक पार्टिकल का r1 r2, बिकॉज नाउ बाय चेंजिंग द पोजिशन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम new axis passing through point O will change. Accordingly, value of τ1 will change and effective value of torque of the entire body also will change, because I is the function of position of axis of rotation, means distribution of mass of a body from about the axis of rotation. ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, खाली मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो फॉर दिस एक्सिस वैल्यू ऑफ टो थ्रू एक्सिस पॉइंट ओ इज आई ओ अल्फा. आई ओ लेनी है, इसकी वैल्यू आई ओ डैश नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है. सो टो इज इक्वल टू आई अल्फा. And this equation is analogous to F is equal to ma in linear motion. M is replaced by I, F is replaced by tau. Force, that is the cause, sets the body in motion, and this is the opposition offered by body for that respective motion. अगर टाइम ख़त्म होता है, एवरीवन विल रीजॉइन द मीट ऑन द सेम लिंक. मैंने शेड्यूल करके रखी है, 40 मिनट्स के बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, वापस आप लोगों को रीजॉइन होना है. सो दिस आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेज मच इम्पॉर्टेंट रोल इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क के लिए ये पूछा जाता है. ओनली रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी का जब हम लोगों ने डेरिवेशन लिया तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो खाली हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था. नाउ व्हेन यू डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, रिमेंबर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So in answer you should mention the direction of torque also. It means what? All particles experience torques, and directions of these torques experienced by individual particles is unidirectional along the same line, along the axis.
ये आप लोगों को लिखना ही है एंड दिस इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड. टॉर्क की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द टॉर्क्स एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ये लिखना मत भूलिए बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So we have found relation tau is equal to I alpha by again defining moment of inertia. So moment of inertia is addition, summation है ना, of product of mass and its square of distance from axis of rotation. Sum of products of mass of particle and its corresponding square of distance from axis of rotation. उसकी ये definition हो गई. So I की अभी dimensions क्या आएगी? Mass is m1 बराबर और distance is measured in terms of length. So 2, so L2 and it is independent of time. So dimensions of moment of inertia is 1, 2, 0 for mass, length and time. What will be its SI units? Mass is measured in terms of kilogram and distance is measured in terms of meter. So kilogram square meter is SI unit of moment of inertia. जब हम लोग लीनियर मोशन के बारे में सोचेंगे तभी हम लोगों को इनर्शिया लेना पड़ता है, मास इनटू अकाउंट लेना पड़ता है. अगर हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में सोचेंगे तो मास यू हैव टू रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एनालॉगस टू each other. Moment of inertia always opposes the state of change in state of body during rotational motion, where m opposes change in state of body when performs linear motion. So this moment of inertia is very important and its value for given body is not constant. When you change the position of axis, about that axis moment of inertia of a body also changes. इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है तो जब एक्सिस इधर से पास होता है तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट नहीं रहेगा, आई ओन डैश रहेगा. सो because mass distribution about different axes of rotation have different कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, इसलिए I की वैल्यू फॉर गिवन बॉडी इज नॉट कांस्टेंट. मास है ना, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता है, उसको प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन में सेट करो, नहीं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में लिनियर मोशन में सेट करो, प्लस वाई माइनस वाई कौन से भी डायरेक्शन में लिनियर मोशन में बॉडी को सेट किया जाएगा तभी उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर रोटेशन में एक्सिस चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. अपोजिशन ऑफर्ड बाय बॉडी फॉर मोशन विल बी डिफरेंट एवरी टाइम. उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है. तो मैंने कल आपको बोला था सेंटर पे रख के हम लोग नोटबुक घुमाते हैं. इफ आई पाइवोट द नोटबुक एट इट्स एज, नोटबुक के एक एज के ऊपर मैंने पाइवोट किया तो उसको घुमाना आसान नहीं है बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल इधर था अगर एक्सिस मैंने इधर लिया तो ये डिस्टेंस डबल हो गया. सपोज इफ द बॉडी इज सिमेट्रिकल तो इसीलिए क्या होता है आई बढ़ता है और अपोजिशन इंक्रीजेस मीन्स व्हाट वी हैव टू गिव मोर एंड मोर टॉर्क ऑन द बॉडी. ज़्यादा फोर्स हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा टू सेट द सेम बॉडी इन मोशन. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी हैव कंसिडर्ड वन इक्वेशन. we will proceed further to get one more taking analogy. अभी मैंने क्या बोला, लीनियर मोशन में जो फोर्स है हम लोगों को एंगुलर मोशन में टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है. ऑन अकाउंट ऑफ मोशन in straight line
that particle or that body also possesses linear momentum. If you take analogy of linear motion with angular motion, you can also predict body in angular motion should also have angular momentum. जो क्वांटिटीज लिनियर मोशन में मिल रही है बॉडी को, वो क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में मिलनी चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम possessed by body in rotational motion by taking analogy of body in its linear motion, in its translational motion. So our next equation to derive formula for angular momentum possessed by rotating body. Get the question? Write down the question. Everyone will write the question. Derive expression for angular momentum. Derive expression for angular momentum of rotating body. Angular momentum of rotating body. ये भी 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आ सकता है. In rotational motion there are number of derivations. Even in circular there are number of equations. This chapter is having weightage of 5 to 6 marks, 5 to 7 marks. 5 marks के questions compulsory आएंगे with options. The questions of 7 marks will be set on this chapter. तो कुछ MCQ आएंगे, इसके ऊपर VSA आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर फॉर 3 मार्क्स आते हैं, न्यूमरिक सेट किए जा सकते हैं. तो इतना सारा पढ़ाई आप लोगों को ओनली फॉर 5 टू मार्क्स के लिए करनी पड़ेगी. बट यू कैन cannot keep any of the chapters from the syllabus for option. हर एक चैप्टर के लिए स्पेसिफिक कंपलसरी मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. तो आप लोगों को सब चैप्टर्स करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है ये चैप्टर नहीं किया तो मैंने ये चैप्टर किया तो आई वुड एबल टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस. ऐसा नहीं होता है, सब आप लोगों को करना पड़ेगा. सो वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 to 7 marks. 7 marks with option and 5 marks compulsory. I have started with point 1.8.1 on page number 17. मैंने दूसरा डेरिवेशन चालू किया है. पेज नंबर 17 के ऊपर देखो 1.8.1. I have taken 1.9 earlier and I am proceeding now with 1.8.1. Means by concept of angular momentum, it is also called moment of linear momentum. 1.8 देखो on page number 16. उसमें एंगुलर मोमेंटम दिया है. हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन फाइंड किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड इट इज एनालॉगस टू लिनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. तो टेकिंग एनालॉजी यू विल गेट रिलेशन एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. ये एनालॉजी लेके भी हम लोग डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं. ओनली यू हैव टू डिराइव इट थियोरेटिकली. ये थियोरेटिकली हम लोग फाइंड करेंगे. अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम लास्ट इक्वेशन एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. अगेन आई विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो लीनियर का एम एंगुलर में आई से रिप्लेस होता है, लीनियर की भी एंगुलर में ओमेगा से रिप्लेस हो जाती है. तो आई बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्लेज सेम रोल एज दैट ऑफ अपोजिशन फॉर एनी चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इज इन रोटेशनल मोशन. सो लेट अस डिफाइन कंसिडर बॉडी. मैंने क्या बोला है,
डायग्राम निकालने की, ये इसमें डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली राइट इट. So what happens for particle number 1 of mass m1 lying at distance r1, you can define linear angular velocity. अभी हम लोगों को ये रिप्लेस करना है. तो now what we have to assume, body is rotating with angular velocity. जो टर्म्स एंड में मिलने वाले हैं एक्सप्रेशन डिराइव करते समय, वो टर्म्स आप लोगों को देखने हैं. टॉर्क, दैट इज force was related with acceleration. So during expression for torque, you have chosen कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन. अभी एल में क्या आएगा, ओमेगा आएगा. तो अभी हम लोगों को क्या एज्यूम करना है, बॉडी इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, डोंट यूज एंगुलर एक्सीलरेशन. जो एक्सप्रेशंस लास्ट में आता है ना, उसके हिसाब से हम लोग जब भी कंसिडर अ रिजिड बॉडी बोलते हैं ना, तभी वैल्यूज असाइन करनी है. So we are assuming a rigid body having capital N particles, masses m1 up to mn at distances r1 up to rn from given axis of rotation respectively, and body is rotating about axis suppose through point O of the body with now constant angular velocity. अभी इधर हम लोग बोलेंगे कि बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है. ऐसा एज पर आवर रिक्वायरमेंट यू हैव टू असाइन द वैल्यूज टू द बॉडी. सो बाय नोइंग वी कैन डिफाइन इट्स लीनियर स्पीड, बिकॉज इधर वी आता है ना, तो हम लोग लीनियर स्पीड फाइंड करेंगे. v1 विल बी आर ओमेगा, r1 ओमेगा, v2 विल बी r2 ओमेगा. फॉर लास्ट पार्टिकल vn विल बी rn ओमेगा. ये अपनी पहली स्टेप आएगी. वंस यू नो linear velocity, you can find linear momentum. What is linear momentum? Of first particle will be then mass into velocity, but this velocity is linear. So mass m1 into r1 omega up to pn will be then mn rn omega. And you know moment of this linear momentum and addition of moments of linear momentum of all these particles will give you angular momentum of rotational body. तो रोटेशनल बॉडी के एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, मोमेंट्स ऑफ लिनियर मोमेंटा ऑफ ऑल पार्टिकल. लिनियर मोमेंटम निकालना है और उसका वापिस मोमेंट निकालना है. तो मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटा इज कॉल्ड angular momentum of that particular particle. So L1 will be then what, R1 into M1 R1 omega, that will be M1 R1 square omega. Similarly, moment of linear momentum for particle having mass m2 at distance r2 will be m2 r2 square omega up to ln is equal to mn rn square omega. So addition of all these moments of linear momentum of all particles gives you angular momentum of rotating body as a whole. So that will be then m1 r1 square omega plus up to mn rn square omega, that is L1 plus L2 up to ln. Addition, sum of moments of linear momentum of all particles gives angular momentum for the rotating body. So क्या आ जाएगा इधर, अभी वापिस वही आएगा, ओमेगा इज कॉमन, MIRI, where number of particles I run from 1 to n. So this is again moment of inertia. So L is equal to I omega, where I again comes into play, where I is some addition of products of mass and its square of distance from axis of rotation.
फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर ध्यान दो, आई के फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर। आई प्लेज द सेम रोल एज दैट ऑफ द रोल प्लेड बाय मास इन linear motion, always opposes any change in state of motion of body in rotational type। रोटेशनल में जो अपोज होता है ना बॉडी के स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है। So this L is equal to I omega. So we have considered second derivation. One, torque with angular acceleration, and the other is angular momentum with angular velocity. L is equal to I omega. You all know one basic principle which we have learned in linear motion। लीनियर मोशन में क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कॉन्जर्व्ड होता है। आई एम मूविंग फर्दर फॉर नेक्स्ट एक्सप्रेशन। सो इन लीनियर मोशन वी ऑलवेज ऑब्जर्व कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Linear momentum is always conserved. With analogy, you can say we always observe conservation of angular momentum in rotational motion. Only opposition M should be replaced by I in rotational motion। ये जो हम लोगों ने सीखा है, दिस यू हैव लर्न इन 11 स्टैंडर्ड। 11वीं में आप लोगों को ये पूरे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। ओनली रिमेंबर, इन लिनियर मोशन taking with analogy, for angular rotational motion we can consider conservation of angular momentum, means always L remains constant unless no external torques act on the body। टॉर्क की वैल्यू क्या है, बदलनी नहीं है, वो इट शुड कीप कांस्टेंट। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन शुड ऑलवेज बी conserved। and using this we are proceeding further on point number 1.10 पेज नंबर 18। मैंने अभी ये चालू किया है, कौन सा, 1.10 पेज नंबर 18 निकालो, ओपन पेज नंबर 18 एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट 1.10। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, 1.8 सीखा, 1.8.1 डेरिवेशन लिया, बाद में 1.9 को पूरा किया। नाउ वी हैव स्विच्ड ओवर टू पॉइंट 1.10। सो व्हेन नो टॉर्क एक्ट्स, यानी कि क्या, टॉर्क तो एक्टिंग है, तब तक बॉडी तो रोटेट नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार वंस यू हैव गिवन टॉर्क, if there is no any change in its direction and value, body always have constant angular momentum of given axis। ये एक्सिस नहीं चेंज करना है। वंस बॉडी रोटेशन किया तो विदाउट चेंजिंग एक्सिस इट्स एल शुड बी रिमेन सेम कांस्टेंट इफ no external unbalanced torque act on it। This is called conservation of angular momentum। अभी ये हम लोगों को मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, उसका कॉज बिहाइंड हम लोगों को सर्च करना है, विच कॉल्ड डायनेमिक्स। अगेन मैंने क्या बोला, हर एक मोशन के हर एक एक्सप्रेशन में उसकी काइनेमेटिक्स अलग से डील करो, उसकी डायनेमिक्स अलग से डील करनी है। तो ये अभी मैंने जो बोला है ना, एल कांस्टेंट, एल इज कॉन्जर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, ये हो गया काइनेमेटिक्स। और उसके हिसाब से आप लोगों को एग्जाम्पल्स देनी है, इलस्ट्रेशंस बताओ, जिसमें बीइंग एल कॉन्जर्व्ड you can perform different activities, that is the part of kinematics। L constant रहता है, omega is 2 pi upon t, that is 2 pi n।
the frequency of revolution of rotational body. So you can relate this L with N also. You can relate this L with T also. Instead of omega, you rewrite it in terms of N or T. तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हम लोग लिंक कर सकते हैं विथ द एंगुलर वेलोसिटी और विथ एंगुलर मोमेंटम. अभी देखो उन लोगों ने दिया है एल कांस्टेंट है, यानी कि इफ वेलोसिटी इज ओमेगा 1 एंड इफ रोटेशन एक्सिस की पोजीशन चेंज की जाती है तो ये सेम बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो इफ आई चेंजेस ओमेगा शुड गेट सेल्फ एडजस्टेड. इट शुड टेक वैल्यू ओमेगा 2 not omega 1 so that this product or I omega will be conserved. हाँ, आई चेंज करो ओमेगा चेंज होती है अपने आप. मेरे को बताओ, बैलेट डांसर है ना, बैलेट डांसर क्या करता है, सपोज इट हैज केप इट्स बॉडी स्ट्रेट, लेग और ये किया तो ये एक्सिस के ऊपर वो घूम रहा है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है दोनों बाजू में because its arms are vertical, so it can acquire greater angular velocity when it spin. But if it stretches the arm, तो क्या हो जाता है, ये पार्टिकल इधर था तो अभी इधर गया, तो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इट्स movement of inertia is increased. Ultimately total movement of inertia of the body increases. मैंने एक्सिस की पोजीशन चेंज नहीं की है, ओनली बाय सेटिंग माई बॉडी आई कुड कंट्रोल आई. और अगर आई इंक्रीज हो जाता है तो अपने ऑफ ओमेगा क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए. सो नाउ द एंगुलर वेलोसिटी फॉर दैट पर्सन, बैलेट डांसर जो है ना, वो अपने आपकी खुद की ओमेगा कंट्रोल करता है, not changing the position of axis, instead changing the distribution of its mass of the body about the given same axis of rotation using the principle of conservation of angular momentum. 1 minute. I am talking about the applications of conservation of angular momentum. मैंने काइनेमेटिक्स के बारे में बोला, ये काइनेमेटिक्स है, ये हो रहा है और ये होने के बाद उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग सोच रहे हैं. टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिराइव और वी विल प्रूव एल रिमेन्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क हैज वैल्यू 0. ये जो डायनामिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे. डायनामिक्स मीन्स कॉज, उसके बिहाइंड कॉज क्या है कि एल कॉन्जर्व हो जाता है, तो कॉज का अभी नहीं ध्यान देना है. हम लोग क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे और ड्यूरिंग एप्लीकेशन हम लोग एज्यूम करते हैं कि एल कॉन्जर्व होता है. सो इफ आई चेंजेस वैल्यू ऑफ ओमेगा शुड गेट सेल्फ एडजस्ट. हम लोग उसके बारे में सोच के डिफरेंट इफेक्ट्स यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन यूज द सेम प्रिंसिपल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स. हाँ, तो मैंने पहला इलस्ट्रेशन क्या दिया, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का. बैलेट डांसर, बैलेट डांसर क्या करता है, अपने आर्म्स बॉडी के बाद साथ रखे तो ओमेगा ज़्यादा आता है, और स्ट्रेच किए आर्म्स नहीं तो लेग्स. आइस डांसर, आइस स्केटर्स वगैरह है ना, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं नियर द एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो अपने आप बिना एक्सिस की पोजीशन चेंज किए उनकी एंगुलर वेलोसिटी वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस कम करना है. सब अपने अपने ऑर्गन्स बॉडी के क्लोज रखने हैं. अगर दे वांट टू डिक्रीज द स्पीड दे हैव टू स्ट्रेच डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, legs away from the body, away from the axis, so that they can have less angular velocity and they can perform one round
जो एयर में जंप लेते हैं ना स्केटिंग करते समय, तभी उनको ओमेगा पहले कम करनी पड़ती है, और बाद में वो जंपिंग करके डाइव करके भी वापस उनकी ओमेगा खुद बढ़ा सकते हैं। सो बैलेट डांसर इज वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस। और ओमेगा इंक्रीज किया यानी कि क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन उन लोगों ने क्या की, इंक्रीज की। 1 सेकंड में खाली एक राउंड लेते हैं, ओमेगा ज़्यादा रहेगा तो 1 सेकंड में वो मोर देन वन राउंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So indirectly it affects frequency. So number of rotations they perform can change. ज़्यादा स्पीड लिया तो ज़्यादा रोटेशंस हो जाएंगे उनके। द सेकंड इज डाइविंग इन द स्विमिंग पूल, गिवन ऑन पेज नंबर 18। 18 के ऊपर दिया है, वो भी आप लोग पढ़ो। अगर नहीं समझता है तो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द सेम। So today I am winding the meet for all. You have to join the next subject lecture.